Is the volume there now? Are you able to hear me? Hello? Yes, yes, yes. Okay. Okay, okay, okay. Sorry. Actually, I was trying to figure out few things because my laptop got formatted actually. मैं वो सब बता रहा था, I think. So I'm not able to start advanced yet, but ठीक है. What we will do is we'll do over zero the charts. That is also fine. Okay, so let me go to zero the. New window. Let me start here zero the and get it there. Kite किधर है इसका? Can we try allow me to share the screen? I can share and then you can explain. That also we can do. I think that is also fine. But then फिर आपका screen record नहीं होगा, तो problem उधर हो जाएगा. Okay. But I think let me just get this zero दा भी मतलब ये ऐसा हो गया ना कि हाँ अभी हुआ. Because somewhere because of formatting everything is gone. And I didn't realize that yesterday. नहीं तो मैं ये सब कल करवा लेता था उसी के पास. But okay. So I think we are okay. We are back. Okay. So shabash. Okay. So let's go to first understand. ये first time login किया तो ये पूरा मेरा change हो गया. Okay. Okay. So let's go to Nifty first. Okay. So we'll go to Nifty directly here. Okay. So I was looking into Nifty daily and weekly charts yesterday as well. Now daily look at this. RSI is at 26-27 level. Okay, so this means we are now in a very, very oversold market where you should expect one bounce at least from this level till 40. ओके सो अभी कोई शॉर्ट मत करना ज्यादातर क्योंकि शॉर्ट ट्रैप हो जाने वाले हैं because Nifty itself is too much oversold. Second thing is weekly, if you go to see, it has broken 40, but it's very rare only during this time, which was a corona fall. Okay, it had broken 40 and came as low as 16. Okay, बाकी normally अगर आप कितना भी साल का डेटा देखोगे ना, you will never see Nifty going below 40 for more than a week or a two. Okay, ये भी कुछ तो fall आया रहेगा. This is 2018 18. Okay, so this is also see for only 1 2 3 4 weeks it was down and then it was pulled up. Okay, यहाँ पे तो खाली एक हफ्ते के लिए वो नीचे था, उसके बाद pulled up आया rally. Okay, so the same thing you can expect here. Okay, we can expect a pullback on weekly because it's also at price support, by the way. Okay, so if you go to see, we are already at price support. Okay, so this is the band, consolidation band. Okay, so maximum that it can come is 15,500 अगर और नीचे आना है तो. Okay, नहीं तो now we are at a price support here. So let me actually इसको बाहर निकाल लेता हूँ. Okay, so now if you look at it, this is where we have support as well, and that is the same area around which we might see now reversal. क्योंकि इसके नीचे ज्यादा ये टिकेगा नहीं. It's a normal inflation related fall in the market, or maybe the fall which was there. And also if you look at it, I think someone had asked me for island reversal also. Okay, so yes, see, this is a particular case where you can say this is an island reversal. There is a gap up here and then a gap out
gap down here. So this is a perfect island reversal with the target of the swing low. So ये low तक का वो हो भी गया, तो weekly island reversal था, उसका target भी meet हो गया है. So now there is a chance that we might see a bounce back from here or maybe here. So this lows might be touched and we might see a reversal. Okay, so that is another thing. Okay, and let's see monthly पे क्या scene है इसका. Okay, so monthly again is at 20 MA support. Okay, so monthly, yes, broken 60 for sure. So the bullish trend is over. Okay, so ये एक trend चला गया है. Now we are into a downside market, and इसमें downside does not mean that it will keep going down. Okay, it will now make lower top, lower bottoms जो वो already weekly पे भी कर रहा है. Okay, so that is what now you might see in the market happening. Not exactly, because now we are at here and daily RSI is already 27. Okay, so without any reason वो इतना नीचे नहीं जाएगा अभी. Okay, so if you look at it at 20 MA support on monthly, price support on weekly, okay, and probably RSI on day is gone too low. Okay, so this is where we are. Okay, so this touch can be done. Okay, and if you recollect, I think जब मैंने previous किया था तभी भी मैंने ये दिखाया था एक चीज जो था कि वीकली पे इट इज डूइंग लोअर टॉप लोअर बॉटम. सो ये लोअर टॉप हो गया, ये और उससे भी लोअर हो गया, ये एक बॉटम हो गया, ये एक बॉटम हो गया, एंड नाउ दिस इज अ लोअर बॉटम देन दिस. सो नाउ द बॉटम्स आर सिम्स लाइक इट इज बीन डन. ओके, अभी इधर से ज्यादा नीचे जाना मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है. Okay, so this is one place where you can expect that there can be a bounce, and that bounce can be till 60 on 40 on daily first level. If crossed, it can come up to 60. तो वापस एक नया टॉप तक आएगा, और वो टॉप भी कहाँ तक आएगा वो भी हम देख सकते हैं एक्चुअली. Okay, so if you have a trend line here joining this tops, okay, so there is a possible that there can be a bounce till almost 17,800 17,700 के आसपास का रेंज का. ओके, तो ये एक टॉप आ सकता है अभी. so there can be a fall continuation and now a rise till here. so fall यहाँ पे अभी ये बंद होना चाहिए, एक बार यहाँ पे टच करके बाउंस आना चाहिए. नहीं आया, then it is a more worst market, and then can be a panic selling which can then break down the market up to almost this level 14,200 या 14,500 level तक वो गिरा सकता है निफ्टी को. Okay, so this levels can approach. Okay, if we start market below 15,300 levels, if the market starts as a closing, okay, that can be the panic selling for major of the retailers, which can then bring the market down. Okay, and in as per what I am thinking, for even government, if they have to get LIC IPO with some profits to the investors or for the people, they have to keep the market up for 2, 3, 4 days till the IPO gets listed. Okay, मैंने आईपीओ के लिए मैं कभी भी नहीं डालता हूँ. ये वाले आईपीओ के लिए थोड़ा टेम्पटेड था टू पुट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी होल्डर कोटा पे मेरे को मिल सकता था. बट फाइनली आई थॉट कि ये मार्केट में अभी ये लिस्ट भी होगा ना, तो 10-15% मेरे ख्याल से ऊपर आएगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100% रिटर्न टाइप ऑन ओपनिंग जैसा तो आईपीओ में. ओके, सो let's see what it does. But if they have to bounce, this is one level where we have seen now lower top lower bottom been made and should be a reversal coming up in the next week. तो next पूरा week है, Monday क्या करेगा मालूम नहीं है. Okay, but yes, this is what the scenario is. Below 15,300, yes, panic selling will trigger in the market.
Okay, with no reason to panic, still there would be a panic, and it would be some buying opportunities around 15,000 or maybe 14,500 के आसपास में ये एक लेवल आ जाएगा जहां पे आपको हैवी डिस्काउंट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे. Okay, so that can be one of the buying zone as well as investment opportunities again for the bulls or for the investors. Okay, so this, if it comes, if okay, my view is from here only we should start moving up, क्योंकि ये इंडाइस है, ये ज्यादातर बैंड वॉक नहीं करता. आप देख लो, ये बैंड वॉक चालू कर दिया इसने, तो ये बैंड वॉक इधर इमीडिएट खत्म नहीं हुआ तो मोर डिजास्टर. Otherwise, it will start going up again within the bands. Okay. So let's have this write up. So closing क्या दिया इसको 15,780. Okay. So Nifty is, अरे बाप रे, कहाँ कब बनाया था ये मैंने. Okay. I don't think so this will be visible. मैं थोड़ा इसको zoom करता हूँ. अरे 14th का 41st मुझे खुद को नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिखेगा. एक मिनट, मैं इसको पूरा जूम बराबर जूम कर देता हूँ. कहाँ रहता है, व्यू में रहता है ना भाई, जूम हो जा बेटा, जूम. ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल, राइट. अभी बराबर जूम हो गया तो आई थिंक दिस इज नाउ विजिबल टू एवरीवन. यस, ओके. सो नाउ लेट्स राइट डाउन. वी हैव कौन से जमाने में बुलिश था मालूम नहीं बेचारा. See, we have seen almost everything in this market. We saw everything as diamond. अभी तो ये सिल्वर स्पून के भी लायक नहीं बचा बेचारा. ओके, ये तो पूरा भी रीराइट करना पड़ेगा. डेली बेरिश कैंडल and band walk, lower band walk. ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा RSI at 27. उधर से ही कर ले पूरा. RSI 27, weekly band walk and RSI below 40. Okay, and monthly breaking of 60 and at MA20 support. ठीक है, तो एक ही पॉजिटिव है, MA20 सपोर्ट एंड इसका RSI बहुत लो है. ओके, सो नाउ लेट्स सी. कुछ तो गड़बड़ है, इसको जरा यहाँ से एंटर मार के नीचे ला देते हैं. ओके, सो वी कैन देन सी इट प्रॉपरली. बेटा ऐसा नहीं करने का, थोड़ा रुकने का. हाँ बस ठीक है. मेरा माउस भी कुछ ज्यादा ही फास्ट मूव हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया ये सबको. ओके, सो रेजिस्टेंस नाउ इज एट 16,000 itself, which is the round number. कल वो बहुत बुरी तरह से रेजिस्ट किया उसको. देन विल बी 16,450 जहाँ पे पहले सपोर्ट लेके वो ऊपर भागा था. एंड देन if it crosses 16,700, अभी नीचे में सपोर्ट इज हियर ओनली 15,800. अगर ये टूटा तो टूटा इसी तरह ऐसे टूटा. Okay, so these are going to be the support and resistance for Nifty now.
Okay, now let's go to Bank Nifty. Nifty किधर गया? Enter symbol. Nifty Bank. क्यों नहीं दिखा रहा है Nifty Bank? So Nifty Bank also shows similar setup on weekly. Okay, we same. See lower top. Okay, island reversal perfect था इसमें भी. और देखो यहाँ तक का उसका टारगेट था जो दे दिया उसने स्विंग लो तक का. सो आई थिंक गौतम आपने भेजा था यार, आपने भेजा था या प्रमो, आई थिंक प्रशांत ने भेजा था आइलैंड रिवर्सल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइलैंड रिवर्सल. ओके, परफेक्ट आइलैंड रिवर्सल है ये. गैप अप, गैप डाउन, एंड देन दिस इज हियर. इट हैज टू बी डोजी, इट कैन नॉट बी अ बिग कैंडल हियर. ओके, सो डोजी होना जरूरी है आइलैंड के लिए. और ये पूरा देखो यहाँ तक आ गया ये. ओके, सो दिस इज वन थिंग. सो वीकली दिस आल्सो हैज गॉट बैंड वॉक बट लो टारगेट मेट. ओके, डेली में बैंड वॉक चालू है. वन कैंडल, टू, थ्री. So there is one bounce already there, and now there is no bullish divergence also. But see this 27 का RSI, 28 का RSI, उतना लो RSI मतलब, and it is now at gap support. So ये वाला गैप है इसको डेली पे. ओके, सो एक गैप सपोर्ट के बेसिस पे है ये रुका. सो दिस कैन बी वन बाउंस एक्सपेक्टेड नाउ फ्रॉम हियर. ओके, बट बाय would be above this only. 34 600 700 के ऊपर में ही बाय आएगा. उसके पहले बाय आएगा नहीं. तो वही वो इंट्राडे स्विंग खेलो जब तक खेलना है तब तक. ओके, सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. एंड मंथली सी 60 resisted and now below 20 MA also. So ये fall का this can be the part, or it might now take support and start bouncing about 20 MA. So ये month अभी भी पूरा बाकी है. 14 दिन हुए हैं और आधा महीना बाकी है. आधे महीने में अगर ये वापस 20 MA के ऊपर में बाउंस आके इधर तक आ जाता है अराउंड से 34,500 34,600, that means it shows strength and support at 20 MA. Okay, so we need to now watch for this. ये गिर सकता है तो अभी 43 MA तक आ सकता है, which is again at almost 30,300. Okay, but 32,800 was one of my target because that is the previous high monthly. ये जो कोरोना के पहले का हाई था वो अराउंड वो लेवल पे था. That's why I was expecting that level to come. Okay, for support, and that might be retested क्योंकि यहाँ पे भी उस पे retest हुआ है, ये hammer से भी retest हुआ है, and now this can be retested or it can be broken finally to come to this. So yes, both side markets available possible, but it will not be one way now. Okay, because RSI will have to correct. वो एक बार 40 पे जाके रेजिस्ट करेगा डेली चार्ट पे, उसके बाद गिरेगा. तो यहाँ तक वो फ्रीली गिर पाएगा, नहीं तो फिर वापस यहाँ पे अटक अटक के गिरना ही है. अगर आना ही है तो अटक अटक के आएगा. सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट वन बाउंस इज पॉसिबल नाउ, एंड दैट बाउंस विल टेक आरएसआई एटलीस्ट एंड करेक्ट इट एट अराउंड 40 रेजिस्टेंस तक. ये जो इधर किया ना वो उसको वापस करना है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट विल, एंड देन सी द फॉल इज मोर मैसिव. ओके, यहाँ से ऊपर आया लेकिन दुगना फेंका गया नीचे. ओके, सो अगेन ये यहाँ तक आएगा, एक एनआरडी बना सकता है और एनआरडी को नीचे फेंक सकता है. ओके, अगर आप ये भी दोनों कैंडल के बीच में देखोगे तो एक एनआरडी था और वो एनआरडी का टारगेट भी आ गया. Okay, so be very watchful and careful when you are now trading. Mainly short is the place where you should be looking forward to. But yes, buy can be when 40 is crossed and 60 is resisted, you again go short. Okay, so simple funda hai wo abhi ke liye. Okay, so if you look at, even see, this is where I think I shorted yesterday at 960 30 960 पे शॉर्ट किया था मैंने. मैं तो जल्दी निकल गया बिकॉज yesterday I was outside and मैं लंच के टाइम पे ही घर पहुंचा था सीधा. So I was not able to trade, but see, this was the fall after 60 got resisted.
Okay, so it was a good trade that anybody would have taken because upper band 60 together, so it's a good short trade at that level. Okay, so let's write down now for this. तो एक मिनट अब वापस डेली जाना पड़ेगा. इसका क्लोजिंग क्या है? 33,120. ओके, सो कहाँ था बेटा तू और कहाँ पहुंच गया? ओके, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का. ओके, मंथली ब्रेकिंग ऑफ 60 एंड MA20. ओके, सो ये वाला MA20 के भी नीचे है. Okay, so it is now below breaking of this and 20 MA support. Okay, so this is where Bank Nifty is right now. It's spot chart. Yes, you are right. Okay, so that is where we are with respect to Nifty, Bank Nifty. Okay, now let's put this in place. 33,500. जब तक 34,200 के ऊपर नहीं जाता तब तक I don't expect it to grow at all now. Okay, support lies at the same level where we are right now. So 33,100 is first support. 32,800 is another, and last final hopes are this. Okay, so we got now immediate lined up support in a very near vicinity. इसने काम नहीं किया तो 32,000 के नीचे सीधा दिखेगा. Okay. Now let's put here. So Nifty IT भी बेचारा टूटा टूटा. अरे बाप रे, इसका RSI तो 24 है. मतलब ये सब एक जमाने में डायमंड डायमंड हो गए थे. This is 32 and it is doing bandwalk. Okay. Somewhere my advance gate is now back. एक मिनट. इसमें कल का डेटा नहीं है. ओके, ठीक है. So I'm still waiting for the data to be there. Okay. So Nifty IT भी देख लेते हैं यहाँ पे. Okay, so 29,600 के आसपास bandwalk has already been doing, and monthly also now at, see ये भी 20 MA के support तक आ चुका है. Okay, so IT में भी there is expectation of a bigger support here. Okay, 20 MA पे support ले सकता है तो लेगा. Weekly it is doing already bandwalk. Okay, ये तीसरा कैंडल है. सी 1 2 3. ओके, सो एज पर फिबोनाची ऑल्सो 3 इज डन. तो अभी या तो ये बंद करेगा और ऊपर आएगा या तो और 2 कैंडल नीचे जाएगा. ओके, 3 के बाद 5 आता है फिबोनाची में भी. ओके, और ये पूरा यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस के साथ चल रहा है. लुक एट दिस. So there is a bullish divergence setup, but this is multiple candle and there is too many candles or too many gaps which it has to close. Okay, तो ये पता नहीं क्या करेगा. यहाँ पे भी देखो ये बड़ा bullish divergence है. This came to almost 21
and now it is 24. Okay, so outside inside भी है, बट उसके लिए क्या चाहिए था, डेली मंथली या वीकली पे 40 या 60 सपोर्ट चाहिए था. ओके, वो है नहीं. तो नाउ दिस इज ऑल्सो लाइक a danger sign for the market. Okay, so we'll have to wait and see what it does, but yes, currently it shows some strength around this. So let's write down even for IT. बेचारा ये भी 6000 पॉइंट का मारा. ओके, सो डेली सेटअप. ओके, वीकली बेरिश कैंडल ब्रेकिंग MA20. भाई बहुत पुराना है बेटा तू तो. वीकली बेरिश कैंडल, 3 candles lower band walk and RSI below 40. ओके, इसको भी यहाँ पे कट कर देते हैं ताकि हमको कुछ विजिबिलिटी आ जाए. ओके, एंड मंथली बुलिश. अरे वाह बेटा, क्या था तू एक जमाने में. मंथली बेरिश कैंडल बिलो 60. बिलो का स्पेलिंग को तो गलत गया ना. बिलो 60 एंड जस्ट अराउंड MA20. ओके, ब्रेक और मेक वो देखा जाएगा. ओके, सो मेनली seems to be like थोड़ा गया मार्केट. ओके, सो आई नो इसकी वाट लग गई रहेगी पोर्टफोलियो की, बट दैट इज व्हाट इट इज. अरे ये बेटा थोड़ा सीधा है, बट देखो तो 43 MA को रेजिस्ट कर रहा है, 13 MA को रेजिस्ट किया कल. ओके, सो दिस इज टू थिंग्स दैट इट डिड यस्टरडे. नाउ लेट्स सी वीकली. वीकली ये थोड़ा अभी भी स्टेबल है. सी मेनली FMCG सेक्टर को हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था कि जब कोरोना में एवरी इंडाइसिस वाज मेकिंग न्यू लोज, ये भाई साहब नया हाई मार रहा था तभी. Okay, so this is called as index balancing or manipulating, so that the indices does not fall more rapidly and more bigger uh, price. Okay, so abhi this is showing me strength at on weekly charts. Okay, it's looking good. So ये एक मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे. This is still below 60. It tried to cross 60 and it is resisting. So see, this is again the sign of bearish range shift on this segment as well. Okay, so ये अभी टूटा नहीं टूटा मालूम नहीं, but ये आगे जाके टूटेगा क्योंकि इसके भी दिन भर गए. Okay, see this is what it is. This is the very better sign to say that ये भी नीचे आना ही है और सब 43 MA पे आके सपोर्ट लेंगे. ये देखो, दिस इज वेयर द कोरोना केम. ओके, ये कोरोना से वर्स नहीं रहना चाहिए. सो देन इट विल बाउंस फ्रॉम हियर. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. सो विल हैव टू वेट एंड वॉच नाउ इन द मार्केट बिफोर यू टेक अ बाय ट्रेड. तो मेरे को डर ही लगने वाला है. शॉर्ट ट्रेड भी डर लग रहा है बिकॉज शॉर्ट ट्रेड आप लोगे कहाँ. सब डेली RSI इज एट 2430 लेवल्स, मतलब ओवरसोल्ड के पास में मैं खड़ा हूं, तो शॉर्ट कहाँ करूंगा. Okay, so it's going to be a wait and watch time for us. Okay, जो लोग already short में, they should keep strict stop losses now and hold the trades. Okay, otherwise ये reverse हो जाएगा और fall का कुछ मिला भी नहीं, वो भी possible है. So be very very careful when you are doing anything. Okay, so वही एक खाली मैं बताऊंगा क्योंकि ये चीज देखी है मैंने कि ये कहीं पे भी जाता है. ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग व्हाई मैं थोड़ा ये चीज पे ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज आई फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस सिस्टम्स हियर.
Okay, so let's write down for even FMCG. FMCG का 36,800, so 36,900 है वो. Okay, and it shows. I think. Okay, I think I got my Dolphin chart reinstalled, but because everything has been wiped out, वो आगे नहीं बढ़ रहा है. ओके, तो मेरे को अभी डेटा प्रोवाइडर से बात करके करना पड़ेगा. ठीक है, नो वरीज, आई थिंक वी कैन डू हियर इटसेल्फ. ओके, so let's write down now for FMCG what we are seeing. ओके, ये देखो, ये ज्यादा गिरा नहीं है, ये उधर का उधर ही है. सो इफ यू सी दिस, ओके, ये अभी भी सी 36,800 पे रुका है ये. सो ये है तो उल्टा ना उल्टा का बाउंस बैक है इसमें. यू कैन से दिस एज 33,900. ओके, सो यहाँ पे डेली में देर इज अ शूटिंग स्टार at MA 13 resistance. ओके, ये नहीं है इसमें. इट्स नो मोर नाउ बैंड. तो इसका करेक्शन एक्चुअली निफ्टी के करेक्शन के पहले हो गया. ओके, वीकली इट इज heading to 60 but below 60 है ये. ओके, so this is I think bullish candle नहीं है, but it is still the same. It's a kind of a hammer at 20 MA support here. Bullish candle above this and heading to 60 तो नहीं बोलूंगा. अपर बैंड रेजिस्टेंस भी नहीं बोलूंगा. 20 MA पे ही बचा है बेचारा अभी तक तो. ओके, ओके, bullish candle, yeah, I can put hammer. Okay, above this. Okay, and monthly resisting, monthly at, ये हैमर नहीं, उधर उधर अभी थोड़ा बेरिश कैंडल फॉर्मेशन चालू है. जस्ट क्रॉसिंग 16 है. Okay, so now at monthly at this and below 60. Okay, so it is below 60 or resisting 60. Okay, so month complete नहीं हुआ है तो मैं पूरा नहीं लिख सकता उस पे. So we'll wait. Okay, let's go to Nifty Auto. One may expect FMCG positive for tomorrow. If so, then market will come down. ना ना, ऐसा इतना नहीं करो. सो मार्केट भी थोड़ा ऊपर आना चाहिए. अभी निफ्टी शुड नॉट गो टू 20 RSI, नहीं तो क्या, इट विल कम टू ऑलमोस्ट 15,500 या 15,400 लेवल. सो नाउ दिस आल्सो शोज वीकली 40 support taken maybe. Okay, so auto is also showing some sign of relief here. Okay, so price support है उसको यहाँ पे, और डोजी है.
बट इट इज रेजिस्टिंग 13 MA, सो इसके ऊपर जाना चाहिए। सी और एक चीज समझ लो, ओके, जब भी 43 MA नीचे रहता है ना तो वो अप ट्रेंड है। अभी 43 MA इज ट्राइंग टू बी इन सेंटर, ओके। डाउन ट्रेंड के लिए इसमें 43 MA हैज टू क्रॉस अबाउट 20 एंड गो मोर अबाउ, ओके। और ये अगर ऐसा लाइन में है 13, 20, 43 तो डाउन ट्रेंड है, ओके। अगर ये 43, 20 और 13 है तो अप ट्रेंड है। ये देखो, ये 43, 20, 13, देन इट वाज एन अप ट्रेंड, गुड अप ट्रेंड, ओके। बट नाउ हियर इट सीम्स टू बी लिटिल बिट ऑफ थिंग ऑन, ये यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस वगैरह सब था वीकली में, ओके। और वही लेवल पे, वही शूटिंग स्टार्स या वही लेवल पे वापस रेजिस्ट किया, and then there was a sharp fall, okay। So there is it, but now it seems that there can be some reversal in case of this, okay, because it is taking support at 40, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर में निकला तो then we might see some movement again on the upside, okay। So Nifty auto looks okay to me, and yes, this also has bearish range shift, ओके। सो ये थोड़ा भी डाइसी है, ये हैमर का कुछ काम नहीं किया है, ओके। एंड अगेन इट इज एट 20 MA से बाउंस मार रही है, ओके। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि नॉर्मली इंडाइसेस 20 MA के नीचे ज्यादातर रहता नहीं है, लोअर बैंड बहुत रेयरली जाता है, खाली वो ये देखो, दिस इज वेर इट इज 43 MA पे से इट कैन बाउंस, बट दिस वाज द कोरोना फॉल, ओके। सो ये टाइम में पूरा स्लगिश हुआ था सेल्स, तो वो बात अलग है, बट मेनली इट विल ट्राई एंड रिमेन अबाउ the bands, okay, lower band, and 20 MA can be respected in case of indices on monthly, okay। So daily can go down, weekly can touch lower band, but monthly ज्यादातर ये ही लेवल पे स्टेगनेंट होना चाहिए और यहाँ से वापस ऊपर जाना चाहिए। So let's see what it does, it is still a 20 MA support, okay। Let's now have this, क्या है ये, 10,400, okay। And this is a bullish crossover, रेंज शिफ्ट हो रहा है या क्या होगा वो देखना पड़ेगा, ओके। सो नाउ एंड दिस इज आल्सो समवेयर आइलैंड रिवर्सल जैसा, तो ये यहाँ तक आ सकता है वापस। लेट्स सी व्हाट इट डज देन, ओके। सो डोजी एट सपोर्ट ऑन वीकली, डेली क्रॉसओवर, and only thing is monthly at 20 MA support. So from positive side, yes, you can see few things, but yes, we need confirmation। और ये भी ज्यादा कुछ घेरा नहीं है, 400 पॉइंट, 400। सो डेली इसका भी शूटिंग स्टार था, स्टार बट 40 क्रॉसओवर, ओके। वीकली doji at 40 and resisting MA13। अरे रेजिस्टिंग का स्पेलिंग तो बराबर से लिखो बेटा, MA13, okay। And monthly is range shift, okay। सो थोड़ा होप है कि एफएमसीजी और ऑटो थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, बट ज्यादा नहीं, ओके। उसके बाद अगर बाकी के महारथी नहीं चले तो गई भैंस पानी में, ओके। नाउ लेट्स गो टू फार्मा, द लास्ट सेक्टर, okay। See, same is pharma also. There is the same type of setup here in pharma, but ये below 40 है अभी भी, ओके। और ये इसने 40 को रेजिस्ट किया, गैप को रेजिस्ट किया, बहुत कुछ रेजिस्ट किया है। हाँ, हैमर एट लोअर बैंड,
I can also call it as a doji, but see, this is a perfect rate shift, and this you can expect. It's an evening star in making. Okay. So more downside, yes, possible in this sector as well. Okay, and this is what I'm talking. इतना ओवरसोल्ड है ना, फिर एक बाउंस मारेगा और वो बाउंस उसको 40 तक लाके वापस नीचे लाएगा. सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट इट्स गोइंग टू बी जैसे लास्ट ईयर में एक सेंटेंस बोलता था, इट वाज बाय ऑन डिप्स, दिस इज सेल ऑन राइस. ओके, सो ये सेल ऑन राइस टाइप ऑफ मार्केट हो चुका है अभी. Okay, so you keep selling at all new thing. Second thing is there is an NRD as well. एक दो तीन चार 5 bar NRD. See, price is lower, RSI is higher. See this. Okay, so there is a 5 bar NRD also. So we will start seeing now this because we are in a downtrend. NRD downtrend में ही आता है. Okay, so let's write down on this sector as well. 12,600. Okay, daily shooting star. Below 40. Okay, and 5 bar NRD setup. Okay, weekly it's a doji at lower band support, but below 40. मतलब करे तो करे क्या. Okay, and monthly monthly also bearish evening star formation at 60 resistance. Okay, so this is where all the indices are. Okay, so looking at this, yes, we are in a very bad shape, and yes, there can be, though everything is in bad shape, I'm still saying that there can be some bounce back expected only so that the RSI gets adjusted. Okay, because ये सबका daily RSI देखो 27 IT का 24, FMCG was okay, auto was okay, and Pharma had a bounce and now it has got an NRD. Okay, so there are 2 to 3 sectors we have which are very bad. Okay, so they will have some bounce in next week maybe. Okay, and this might get into some correction. Okay, so let's see things. See, I know मैं जब भी RSI का बात करता था, I was telling that below 40 is strongly bearish, right? But you need to understand that my strongly bearish will also have some level where it will retrace. ओके, सो वो रिट्रेसमेंट जो है वो पॉसिबल है अभी ये 3 सेक्टर में, क्योंकि काफी हाईली ओवरसोल्ड है. बाकी आप 24-27 उस तरीके से एनालाइज करोगे कि बिलो 40 स्ट्रांगली बेरिश है, तो ये भी बहुत ही बेरिश है. करेक्ट, इट इज बेरिश, बट इट हैज टू बाउंस टू फॉल मोर. नहीं तो बाउंस के बिना फॉल आएगा तो इट विल बी अ वेरी you can say unstable markets. Okay, which I don't think so the markets right now can go into, because now war hai, na corona hai. This what we are seeing now is impact of the war which happened Russia Ukraine and corona after effects. Okay, so these are after effects which will be not that stronger compared to the reactions we saw during the event itself. Okay, so let's see few stocks then. So Reliance, yesterday we were talking about. Okay, and if you look at Reliance, yes, मैंने कल ही बोला था कि
I think sir said that, now is it still gayi bhains pani mein, ya, where we are, and I had said very clearly we need 40 to be crossed on daily, and wahan se wo gir gaya. Okay, so in a way it is still at gap resistance. ये गैप को पूरा नहीं है उसने. Okay, and now the RSI is at 34.66. Okay, and let me put this as continuous chart. ओके, ये कंटिन्यूस चार्ट करके हम अपने को पूरा डेली और वीकली मंथली सब प्रॉपरली दिखेगा. ओके, सो नाउ इफ यू लुक एट इट, it's a 43 MA पे support, and maybe almost it came till the support level here. ओके, एंड मेरे ख्याल से अगर फिबोनाची देखूंगा तो 61% तक आ चुका है ये. किधर गया मेरा ड्राइंग? हाँ. ओके, तो अगर मैं ये लो से कंसिडर भी करूँ इसको, ये हाई तक का, सी इट इज अराउंड 61%. ओके, सो ये अगर बाउंस होना है इसको, तो अभी दिस इज द ओनली लेवल वेयर इट कैन बाउंस फ्रॉम. ओके, सो लेट्स हैव द फर्स्ट ट्रेड ऑन रिलायंस एक्चुअली. Perfect evening star breaking of 60. Okay. 2428. 535 and 2600 is the price here. See, one target went with this 2349. Other target can be half of this green. Okay, so हम लोग पहले टारगेट पे ही रखते हैं अभी तो. So 2345 and SL can be. Okay. Okay, so does not have any set gap support actually.
हेलो. हाँ. नहीं मैडम, नहीं चाहिए. अरे क्या है यार. अरे इसको यहाँ से कट करके इसके नीचे सेट कर देते. सेल बिलो. It's 90 points versus 200 points, almost 200 points. क्योंकि ये लोअर बैंड वो कर सकता है, ये इंडाइस थोड़ी है. ओके, एंड इट इज देयर इज नो डाइवर्जेंस हियर. 34 का आरएसआई है और ये अभी ये गैप को फिल करने तक भी आ सकता है. ओके, इट इज लुकिंग बेरिश ओवरऑल. Only thing is weekly also it's a shooting star resisting 43 MA. Okay, so that is the main reason why my view is bearish on this stock, because it's resisting 43 MA. So 43 MA broken and then resisted. So this is like a CIP on moving average. And now if there is a chance it will fall down and it can come down till this level. ये 6550 है. हम तो 68 मतलब I am looking forward for lower band on weekly. Okay, so this also looks good. Okay, for a short trade. Okay. हमारा बजाज. अरे हमारा बजाज भी एक शूटिंग स्टार लेके बैठा है. स्टार यार, कलाकार. ये देखो, ये इधर का गैप को रेजिस्ट करके नीचे. ओके, सो दिस आल्सो हैज बीन रेजिस्टिंग गैप. ओके, दिस इज ओके. ये थोड़ा पियर्सिंग पैटर्न जैसा है, बट ओके, तो इसको छोड़ दिया जाए. इसको छोड़ दिया जाए. इसको छोड़ दिया जाए. ओके. यम आर एफ. वेयर इज माय टायर्स गॉन. उड़ी पापा, ये क्या था. लाउड मूव. छोड़ दो. सी, इट्स अ लाउड मूव एंड इट्स अ बुल सैश. ओके, इट वेंट फ्रॉम बिलो 40 टू 60, मतलब इट स्किप्ड वन एंटायर लेवल. ओके, तो इसको तो छोड़ ही देना चाहिए. 13 and 43, वही तो मैं समझा रहा था. That is the trend following moving averages. Okay, so this MRF is looking to be in a very strong uptrend right now also. अच्छा दिख रहा है ये. क्या है प्राइस, क्या है तुम्हारा प्राइस, क्या है. 71,000 है. अरे बाबा, ये देखो. तो क्या करना क्या चाहता है. मतलब मार्केट को जिधर जाने का है जाने तो, मैं टायर बेच के रहूंगा. See, this is taking that support on 43 में. See, इवनिंग स्टार का उल्टा मॉर्निंग स्टार आ गया at 40 support. So monthly 40 works blindly है. ये मैंने तभी भी बोला था ये बाई कर सकते हैं, जब भी मंथली 40 था. आई थिंक हम लोग ने ये टाइम किया था.
मंथली 40 सपोर्ट एंड देन सी इट्स अ बाउंस. ये वापस यहाँ तक आ जाएगा कभी भी. MRF in a way it is looking to be a good buy actually. Look at this bandwalk and 60 support on 15 minutes. Lovely become fantastic. ये अच्छा ट्रेड है एक्चुअली. शायद अरे बाप रे, मतलब ये क्या 1,500 नीचे आ गया था हाई मारने के बाद. पापा 72,400 पे बाई कर सकते हैं एक्चुअली. किधर है एसीसी को मैं बाद में देखता हूँ. तुम निकल जाओ बेटा, मैं तुमको बाद में देखता हूँ. MRF looks actually 71,300 है या कुछ तो क्लोज था ना उसका. क्लोजिंग क्या है? 71,572. अरे बाप रे, 570. ओके, बाय अबाउट 72,500. टारगेट बेटा क्या किया तूने? डिस्प्ले से कंटिन्यूस कैसे हटाया? 74,300 can be expected. So 70. किसी ने कुछ तो बोला है हमारे वीकली 43 में रेजिस्टेंस. अरे बाबा उधर तक का ही तो टारगेट है प्रमोद. वही तो टारगेट है बेटा, उत्तर तक तो जाएगा ना रेजिस्ट होने के लिए. सी दिस, सी ये रेजिस्टेंस इधर इतना ऊपर है और वही मेरा टारगेट है. ओके, उसको रेजिस्ट यहाँ पे नहीं किया उसने, उसने ये लाइन को रेजिस्ट किया, ये सब डूजी बूजी को. तो अभी ये क्रॉस करेगा तो इधर तक आ ही जाएगा वो. तो आने दो, वही तो अपना टारगेट है. उससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करूँ, बस इतना सा ख्वाब है. ओके, लेट्स सी. ये चला गया, मैं क्यों कुछ और किया. ढंग का रहेगा अपनी जिंदगी में. C1 AC इज एट. सो जो भी बाउंस लाने वाले हैं ना वो इसमें से ही है. ओके, 3840 के आसपास में है. जाने दो, ACC को जाने दो. ग्रासन, ग्रासन. बाप रे, बैंड वॉक ही कर रहे हैं, जाने दो इसको. नहीं चाहिए इसको, शॉर्ट करने का भी टाइम नहीं है अपने पास. हाँ? हिंदुस्तान यूनिलीवर ये क्या बोलता है? ये 60 रेजिस्ट करता है तो ये इधर ही शॉर्ट है, लेकिन इधर शॉर्ट है ये. हाँ. हम्म, ये दो माओ के बीच में फंसा है, छोड़ दो इसको, पता नहीं क्या करेगा. एशिया वाला पेंट क्या बोलता है? एशिया वाला पेंट, सो एशिया वाला पेंट B40 सपोर्ट पे है.
हैमर के बाद डोजी, डोजी के बाद गैप अप, ये वही है 13 MAC, इट इज रेजिस्टिंग ऑल द थ्री मदर्स। किसी भी माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया उसको, तो बाई भी हम आशीर्वाद के बाद ही कर सकते हैं। मतलब 3120 के ऊपर में बाई है ये, उसके पहले नहीं है। यहाँ पे भी वही है वो। सो जाने दो, मतलब बोलो ना, मार्केट थोड़ा डाइसियर भी है अभी, बिकॉज दिस इज एट 60 सपोर्ट ऑन मंथली। बट कहाँ बाई करेंगे, डेली पे 40 नहीं है उसको, एग्जैक्ट 41 या 46 के आसपास है, तो यहाँ पे बाई था वो। अभी नहीं लग रहा है ये लेवल पे, सो विल वेट एक्चुअली। हाँ, टीसीएस तक पहुंचे ही नहीं ना हम लोग, आईटी तक पहुंचे ही नहीं। चलो पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या क्या देख लिया। एशियन पेंट देखा, एक मिनट ना, एक लास्ट ब्रिटानिया देख लेते हैं, उसके बाद आईटी चलते हैं और फिर बैंकिंग देखते हैं। उड़ी बापा, ये भी मिस हो गया, ये देखो लोअर बैंड हो रही है और ये पूरा यहाँ तक आ गया। सो कल का दिन बाउंस वाज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, ऐसा हो गया ये तो। दिस इज स्टिल लुकिंग गुड, बट ये देख के डर लगता है, ये देखो, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। कौन सा स्टॉक पे हम लोग ने डाला, एमआरएफ टू डू, ये 43 को रेजिस्ट करके ही नीचे आएगा। एंड नाउ दिस इज रेजिस्टिंग इवन 13 में, सो ये इसके ऊपर में ही बाय कर सकते हैं। नहीं जाने तो, ज्यादा रिस्क है और रिवॉर्ड नहीं है अभी बाइंग का, तो ऐसे भी डर लग रहा है सब। ये देखो एफएमसीजी सेक्टर है ना, स्टॉक्स आर स्टिल अबव 40, ओके, एंड लोअर बैंड सपोर्ट से बाउंस मार रहा है। लेट्स सी टीसीएस एंड इंफोसिस एंड बैंक्स। TCS has got divergence on daily, weekly 40, monthly 60 है क्या, 60 तोड़ा है। Hmm. This is 32, this is, जरा आ जाए इधर, 33, एंड दिस इज 34, मतलब नीचे नीचे गया है ये। अरे बाप रे, जिसका बाइंग इज ओनली अबाउट 13 में, आई विल नॉट डू एनी बाइंग अबाउट दिस। So it's a huge gaps and bullish divergence का भी साइन नहीं इधर, तो थोड़ा डाइसियर है, आई वुड नॉट डू दैट। देन इन्फी, similar chart, but at every point it is resisting actually. Shooting star at gap resistance and 40 resistance, जाने दो। Let's see banking, bullish divergence है इसमें। चलो बैंक निफ्टी का फरिश्ता है जिंदा। There is a 1 2 3 4 5 6 बार bullish divergence, यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यस ओके, लुक्स ओके। 40 आ रहे, और क्या चाहिए बेटा तेरे को। HDFC बैंक लुक्स गुड। So 1291 is the close.
ये तो आया ही नहीं पोजिशनल, तो बेचारा पोजिशनल बोला तो वो लेवल तक ही नहीं आया, पोजिशनल शॉर्ट हो गया उधर से वो। क्या था, मैं क्या देख रहा था, HDFC बैंक 1291 by above 1340. फाइव 40 50 मतलब 65 points. So you can expect it to come to 97 around. Normally, bullish divergence at lower band results into upper band. Okay, but we'll still keep it decent at 1400. Okay, and 86 चलो मिल गया, तो 1400 and SL will be 12. So I think that's it. Now let's quickly look at ICICI and other banks. मतलब ये कौन है? हेलो। हेलो। हाँ या सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपसे जो बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के भी आपसे। अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए यार। अरे यार कहाँ कहाँ से पब्लिक आ रहा है, मेरे को भी नहीं मालूम। ओके, ICICI बैंक। पापा ये तो गया, मतलब सी देयर कैन बी अ बाउंस इन इवन दिस, इट्स एट गैप सपोर्ट। ओके, एंड RSI इज आल्सो 26, बट इस पे बाय नहीं बोल सकते बिकॉज बाय कैन बी अबाउ ये 691, बट जाने दो। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 पॉइंट्स मूवमेंट, 709 710 तक ये आ सकता है। ये भी गया है। SBI का कल रिजल्ट आया ना, उसके वजह से नहीं गिरा था, मार्केट को गिरना था इसके लिए गिरा था। ये भी मतलब अभी सी दिस इज आल्सो ऑलरेडी टच्ड द लोज, तो ये भी बाउंसिंग का चांस है यहाँ से। लेट्स सी एक्सिस, अभी उधर से ही फोन आया था तो याद आ गया एक्सिस बैंक। चलो इसमें भी बुलिश डाइवर्जेंस है 4 बार। ओके, so there is a 4 bar bullish divergence event here which confirms once we cross this, so 655 के ऊपर में, and can expect it to 693 maybe 700 levels. Okay, so this is where you can expect it. So this is a similar setup. Okay, ये देखो bearish divergence बना बना के गिरा है। Okay, और अभी यहाँ पे bullish divergence बना बना के ऊपर आएगा ये। Okay, so this is what is the sign. See this. Okay, it was going up, RSI was going down, and then see the fall started. Now ये यहाँ पे थोड़ा bullish divergence बनाते जाएगा और ऊपर लेके आएगा। ना ना, रिवर्स फ्लैग तो बहुत दूर हो गया भाई, 25 का RSI हो, उतना जल्दी नीचे नहीं जाएगा वो। ओके, सो डोंट डोंट भी उतना बैरिश भी मत हो जाओ कि सब तुमको उल्टा दिखे, तो तुम तो 500 का सीधा 400 लेके आओगे उसको। थोड़ा थोड़ा सब्र आओ, आएगा आएगा, मार्केट उतना जीरो नहीं हो जाएगा। अभी पूरा पब्लिक एकदम बैरिश हो गया लगता है। ओके, एंड आई थिंक वी सॉ ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स आल्सो, राइट? खाली कोटक देख लेते हैं लास्ट। कोटक, उसका भी वही हालत है। ओके, आई थिंक दैट्स इट। कुछ ज्यादा दिख नहीं रहे, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट
stay एकदम आराम से जरा देखना मार्केट. Take trade only if you are confident. Otherwise, wait and watch would be great. 15 minute के चार्ट पे do some time pass, that is fine, but do not do anything much. Real estate is gone, so वो भी कुछ नहीं कर सकते अभी उस पे भी. Okay, so be very careful and let's see how it goes. So okay, so we be very cautious during this 1 or 2 weeks. Okay, yes, May has started with bearish stand, and that means June, July, August can be also bearish. Okay, if that happens, we will get opportunities. Let the indices get around 40 and resist. That is where our fresh shorts can start. So wait for it, and then we will take trades accordingly. But be not in any haste to take a trade thinking that मिस हो गया ट्रेन, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिर चुका है. अभी थोड़ा बाउंस नहीं आया तो गिरने में भी कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं. ओके, so thank you everyone, and probably again next week I'll send recording because there is 2 days continuous training next weekend ko bhi. Okay, so see you all again, maybe probably towards end of the month. Okay, and I'm really sorry again because I'm not able to do this because my ashram schedules have started as regular जैसे pre-COVID था, right? So thank you everyone and see you again maybe 2 weeks down the line.